Once again, you are welcome, students. In your syllabus, there are four models of teaching. The first one is Bruner's concept attainment model. Second is mastery learning model. Third is inquiry training model. And fourth is Glazer's basic teaching model. And out of these four models, one model is compulsory for your examination point of view. It is for the long as well as the short answer question. Today we will discuss about Bruner's concept attainment model. ब्रूनर का निष्पत्ति या संप्रत्यय प्रतिमान, इसको हिंदी में संप्रत्यय या प्रत्यय दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. Then in English it is the Bruner's concept attainment model. It is called Bruner's because Jerome Bruner in 1956 and George Austin, they invented it. That means जॉर्ज J.S. ब्रूनर और जॉर्ज ऑस्टिन ने 1956 में इसका प्रतिपादन किया था. That means these two are the proponent of Bruner's concept attainment model. Now, what is it? जी मैम. The term concept attainment is historically linked with the work of Jerome S. Bruner and Associate, and that it is why the model name is Bruner's concept attainment model. Now, अब सबसे पहले आता है कि कंसेप्ट या विचार या संप्रत्यय का निर्माण करते समय प्रमुख विचार आया कि प्रत्येक मनुष्य में चिंतन शक्ति एवं सामर्थ्य होने के कारण अपने चारों ओर के वातावरण की जटिलता को समझता है कि हमारे आसपास क्या है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें, तथा वातावरण में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों द्वारा वातावरण से तथ्यों को एकत्र करते हुए अधिगम या सीखने की प्रक्रिया पूर्ण करता है. तो ये तो एक विचार आया. विचार के बाद एक कंसेप्ट आया. सपोज आई से एप्पल, देन इन योर माइंड देयर द कंसेप्ट ऑफ एप्पल. अच्छा, कोई फ्रूट है, ठीक है. यदि आपने देखा होगा तो उसके बाद नॉन टू अननोन की ओर जाएंगे. तो ऐसे ही यहाँ पर संप्रति या कंसेप्ट का अर्थ है एक ऐसी विषय वस्तु जो किसी विशेष समस्या से संबंधित तथ्यों के संक्षिप्तीकरण, अमूर्तीकरण एवं वर्गीकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है. Now in English, madam is going to tell you. The concept attainment model CAM is historically linked with the work of Bruner's, Goodnow and Austin. The short form of concept attainment model is CAM. C stands for concept, A for attainment, and M for you know that. This model belongs to the category of information processing models and named as Bruner's concept attainment model. Information processing refers to the ways people handle stimuli from the environment, organize data, sense problems, generate concepts, and find solutions to problems, and employ verbal and non-verbal symbols. CAM means concept attainment model is built around the study of thinking conducted by Bruner's. The Bruner's concept attainment model states that the role of teacher is to create situation in which students can learn on their own rather than to provide package information to students. ये आवश्यक नहीं हम बच्चों को सब कुछ पकड़ा दें. यहाँ पर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल का मतलब है कि टीचर उनके सामने, बच्चों के सामने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे वो कुछ सीख पाए. According to Dictionary of Education 2002, concept attainment model is classroom teaching concept. The basic steps, as in any lesson, are planning activity, implementation of activities, and evaluation. In planning, the following steps are involved. जब योजना बनाते हैं तो इसके जो हैं आपके क्या क्या. फर्स्ट इज identification of goals. लक्ष्य की पहचान. हमें आइडेंटिफाई करना है हमारा गोल क्या है. सेकंड, सिलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल. उसके लिए हम एग्जाम्पल जो है, सपोज अभी मैंने बताया था कि किसी कंसेप्ट में हम कोई फ्रूट बताना जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा गोल क्या था कि फ्रूट को बताना, फ्रूट के नाम, ठीक है. फिर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एप्पल, गुआवा, बनाना, इस तरह से. फॉर दिस इज, ये तो आपने मेरे एक बहुत ही सरल बताया. नाउ वी गो फॉर द कॉम्प्लेक्स. सपोज आई से सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंड सपोज आई गो फॉर द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट इज ए कंसेप्ट. वो कंसेप्ट किसके बारे में है, तो उसके बारे में सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन और उसके बाद उसका एग्जाम्पल प्रस्तुत करना.
Next, selecting the appropriate medium for presenting the examples, that is pictures, models, specimens, इट्स etc. वेरी नेसेसरी टू हैव द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। यदि हमारे पास इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स या टीचिंग एड्स नहीं है तो हम बता नहीं पाएंगे, इसलिए हमारे पास होना चाहिए प्रेजेंट करने के लिए, या पिक्चर हो, मॉडल हो, स्पेसिमेन हो, या फिर कोई चार्ट हो, इस तरह से। Next, the implementation activities involve presentation of examples in the proper sequence and the analysis of characteristics. The final steps in implementation stage is closure that results in the definition of concept and giving the additional examples, etc. At the evaluation stage, that attainment is tested. It provides an efficient method for presenting organized information from a wide range of topics to students at every stage of development, and it was told by Patel in 2014. तो ये था आपका कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इससे पहले जब हमने मॉडल के बारे में बताया था, हमने बोला था कि आप 6 पॉइंट रट्टा मार लेंगे कि सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इज द फोकस। फोकस के बाद सिंटेक्स, उसकी संरचना क्या रहेगी। उसके बाद उसका जो है सोशल सिस्टम, ठीक है, सामाजिक प्रणाली। और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सपोर्ट सिस्टम, एंड लास्ट इज इवेल्युएशन। प्रत्येक मॉडल में ये 6 पॉइंट आपने अपने दिमाग में बिठा लेने हैं, ठीक है। तो नाउ द CAM, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ CAM, क्या क्या है इसके अंतर्गत। फर्स्ट इज द फोकस। फोकस मीन गोल, ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। The यस, main focus of this model is to develop inductive reasoning of the students. A number of examples are presented and students discriminate the attributes of things, person, events and place them into categorized. यस। फर्स्ट जो है हम क्या करते हैं कि ये जो है इंडक्टिव मेथड, आगमन तर्क को, आगमन तर्क का विकास करने के लिए है, जिससे कि वे वातावरण के विभिन्न तथ्यों को चुनकर अपनी चिंतन शक्ति के आधार पर वस्तुओं, व्यक्तियों एवं घटनाओं आदि का पता लगाने के साथ साथ उनका क्या करें, डिस्क्रिमिनेट कर पाए, विभेदीकरण कर पाए। तो फोकस हमारा है किसी कंसेप्ट के बारे में कि वह कंसेप्ट क्या है, किससे रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, एन इवेंट और ए पर्सन और ए प्लेस। सपोज मैं आपसे कहता हूं, क्या कहता हूं, ब्रिंजल, पोटैटो, ठीक है, तो आपके दिमाग में कंसेप्ट आ रहा होगा वेजिटेबल का, ठीक है। सिमिलरली देयर आर सो मेनी कंसेप्ट, उन कंसेप्ट को सामने रखना किसके द्वारा, बाय इंडक्टिव मेथड, आगमन विधि। नेक्स्ट इज सिंटैक्स, उसकी संरचना क्या है। Syntax divided into three phases of this model. The first phase of this model is presentation of data and identification of concept. In this phase, the students compare attributes in positive and negative examples. Students generate hypotheses and state a definition according to the essential attributes. The second signified phase in which the students testing attainment of concept. Teacher confirms students' hypothesis, names, and concept and restart definition according to the essential attributes. And the third phase of students analyze their strategies for attaining concept in their attributes. तो उसकी संरचना क्या है। संरचना में मेन आपके 3 हैं जो हैं। अगर हम जो है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल की बात करें, फेज 1, फेज 2 और फेज 3, ठीक है। फेज 1 में है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट, डाटा को प्रेजेंट करना और कंसेप्ट की पहचान करना। सेकंड फेज है आपका टेस्टिंग अटेनमेंट ऑफ द कंसेप्ट, टेस्टिंग, पता लगाना कि उनके बच्चों की समझ में वो कंसेप्ट आया है या नहीं आया है। और थर्ड है आपका एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्टेज, कि वो किस बारे में सोच रहे हैं। फेज 1 ऑफ द कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल इंक्लूड्स प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट, डाटा को प्रेजेंट करना और कंसेप्ट को पहचानना। In phase 1, one involves presenting data to the learner. Each unit of data is a separate example of or non-example of the concept. दूसरा आता है phase 2 of concept attainment model includes testing attainment of concept. In phase 2, the student tests their attainment of the concept first by correctly identifying additional unlabeled example of the concept, then by generating their own example. पहले तो उनको एग्जाम्पल बताया, उसके बाद बच्चे भी अपने हिसाब से उसका एग्जाम्पल, हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरह से। फेज 3 मैडम बता रही हैं,
The concept attainment model includes analysis of thinking strategies. Students begin to analyze the strategies by which they attain concepts. तो इस तरह से जो है 3 फेज 1 में क्या है आपका, जो टीचर ने करना है, टीचर प्रेजेंट्स लेबल्ड एग्जांपल। टीचर जो है एग्जांपल देता है जिनका नाम दिया रहता है। सेकंड है लर्नर कंपेयर एट्रीब्यूट इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जांपल्स। एंड आफ्टर दैट लर्नर जनरेट एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी। सपोज आई से दैट कैट, लॉयन, टाइगर, तब वो सोचेंगे अच्छा यस, ये एक जो है एक फैमिली है, तो कौन सी फैमिली है, नाउ दिस इज द लॉयन फैमिली। तो इस तरह कैट फैमिली के जितने भी वो एक उसी हिसाब से अपना कंसेप्ट तैयार करेंगे। लर्नर स्टेट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एसेंशियल एट्रीब्यूट, जो उनके आवश्यक गुण हैं उनके हिसाब से उनको डिफाइन करेंगे। दिस इज फॉर द फेज 1। नाउ फेज 2, Phase 2, testing attainment of the concept. The लर्नर आइडेंटिफाइज एडिशनल अनलेबल्ड एग्जांपल एज यस और नो। क्या हाँ या ना में उसका उत्तर यस। teacher confirms hypothesis, names, concept, and restates definitions according to essential attributes. और लास्ट है उसके बाद लर्नर जनरेट्स एग्जांपल। जैसे आपने वो करते थे ना एनालॉजी में, जो है कि इसमें से विषम को छांटिए। जैसे हमने लिखा चेयर, टेबल, चौक, और उसके बाद एक दे दिया पेड़, ट्री। तब आप सोचेंगे चेयर ये तो सारे क्लास के हैं अंदर है और ट्री क्या है बाहर का है। तो एक कंसेप्ट बना कि क्या एनालॉजी में, तो इस और फिर उसके बाद बच्चे भी अपने हिसाब से उस हिसाब से एग्जाम्पल बना सकते हैं। नाउ द लास्ट एंड थर्ड फेज फॉर सिंटेक्स इज एनालिसिस ऑफ थिंकिंग स्ट्रेटजी। जो उन्हें सोचा है उसकी जो है एनालिसिस करना। Learners describe thoughts. लर्नर डिस्कस रोल ऑफ हाइपोथेसिस एंड एट्रीब्यूट्स। Learner discuss type and the number of hypotheses. In this way, there are the three phases in the syntax of CAN, that is concept, attainment, model. Now social system, already you know that social system there is are only two, one is the student, another is the teacher in the classroom, और तो कोई होगा नहीं। तो अब ये किस तरह से काम करते हैं, now madam is going to tell you। In this concept attainment model, the teacher play an important role. Teacher motivates students and guides them for the formulation and analysis of concepts. Teacher constructs example which are both positive or negative examples of concept and present it with their clear attributes. तो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में शिक्षण अधिगम का मुख्य आधार शिक्षक होता है, क्योंकि वही कंसेप्ट के लिए बच्चों को प्रेरित करता है। इस प्रतिमान में शिक्षक का कार्य समस्या उत्पन्न करना, समस्या के समाधान में छात्रों की सहायता करना तथा कक्षा में ऐसा वातावरण उत्पन्न करना जिससे छात्र समस्या का समाधान कर सकें। नाउ द फर्स्ट वन इज द फोकस, सेकंड इज सिंटैक्स एंड थर्ड इज सोशल सिस्टम। नाउ उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, टीचर का क्या रेस्पॉन्स होगा, ये मैंने हेडिंग दिया नहीं है। तो देन दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, द टीचर रेस्पॉन्सेस ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स। बच्चे जो जो जिस तरह से उस कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछते हैं टीचर उनका उत्तर देता है। ये होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में। ना उसके बाद फिफ्थ आएगा आपका सपोर्ट सिस्टम। यू नो दैट सपोर्ट सिस्टम मीन टीचिंग एड्स। In this system, the data are presented with positive and negative examples to the students, and the student describe their attributes. The teacher can record or write those attributes. In this way, the teacher can help the students through support system. ठीक है, सपोर्ट सिस्टम में दैट मीन कोई न कोई उनके साथ, चाहे कोई मॉडल हो, कोई चार्ट हो या ग्लोब हो, वो उनको सामने, और उसके बाद नए नए उसके कंसेप्ट के बारे में उसमें बताया जाना चाहिए। ये फिफ्थ पॉइंट था। और सिक्स पॉइंट होगा आपका इवेल्युएशन। दैट मीन इस पर दोनों इफेक्ट, नर्चरिंग इफेक्ट और वो दोनों के दोनों इफेक्ट कैसे। तो इसके बाद हमें ये पता चल जाएगा बच्चों को इस कंसेप्ट के बारे में पूरा नॉलेज हो गया है। जैसे सपोज आई से दैट इन कॉमर्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट कहाँ हुआ, जहां पर कि पैसा कम गया और ज्यादा आया। लॉस कहाँ हुआ, जहां कम पैसा आया और ज्यादा गया, उल्टा जो है। तो इस तरह से अब बच्चों को समझा, अच्छा प्रॉफिट का मतलब ये है, लॉस का मतलब ये है। ठीक है, तो उसके बाद वो दोनों से हमने लेजर बना लिया, लेजर के बाद बैलेंस शीट बना लिया। एक एक वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप एक एक कंसेप्ट क्लियर होता गया और आगे चलते गए। टीचर ने उनकी हेल्प कर देनी है। तो इन दिस वे ये हो गया। नाउ द व्हाई यूज कंसेप्ट अटेंड मॉडल, कंसेप्ट अटेंड मॉडल का हम यूज क्यों करें।
As an instructional tool, CAM, Concept Attainment Model, can help to engage students with visual impairment into formulating a concept through the illustrations with examples. CAM helps students develop skill and inductive and deductive thinking while learning subject matter in any field in a constructive and meaningful way. Both way. How? By inductive and deductive method. CAM has an important role in the bringing about enhancement in teaching process. It could serve as a structural approach to manage the classroom activity according to the nature of the student with visual impairment in order to achieve a variety of educational objectives. CAM is designed to teach concepts and help students become more efficient at learning and creating concepts. CAM of instruction is very effective to develop cognitive ability of academically disadvantaged student. वो जो है जिन बच्चों को याद कम होता है इस कंसेप्ट अटेनमेंट से वो उनको अच्छी तरह से अपना अचीव कर सकते हैं. Concept attainment model will encourage the students to engage in learning activities with maximum enthusiasm, and this will help them to understand the subject matter more clearly. It serves as an evaluation tool which can improve understanding of mathematical concepts and help build connection among abstract concepts. During identification of concept with essential attributes among positive and negative example makes teaching learning process effective and active. The CAM as a way to provide an inductive lesson to help students develop critical thinking skills and better understanding of the target concept. The CAM based lesson help to increase understanding of concept, engages students with visual impairment to think about their learning and had a positive effect on their attitudes and motivation in classroom. The concept attainment model can be used as a way to introduce, summarize, or to evaluate the topic. The use of teaching strategy for presentation of model, analogies, and metaphor will enhance student understanding and reduce misconception. Now, ultimately, we go for the conclusion. Concept attainment model is an effective teaching strategy which makes teaching and learning process interesting. It makes education accessible for all students, especially students with visual impairment. CAM can be used to help students with visual impairment to solve mathematics learning problems and to clarify their misconceptions so that the achievement of the students with visual impairment in mathematics will be higher. Can also be helpful for teachers in evaluating the teaching learning process. They also assess the achievement of students with visual impairment by identifying misconceptions and missing concepts. Thus, using CAM in teaching and learning process of mathematics will be helpful for the student with visual impairment and teacher both. While we are talking about a visual impairment, जो बच्चे जो है देख नहीं पाते हैं उनके लिए भी एक एक कंसेप्ट को हम अच्छी तरह से उनको हम कर सकते हैं. तो इन दिस वे ये था आपका कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल और प्रत्येक मॉडल के लिए मैंने बताया था कि आपने जो है वो 6 हेडिंग अपने दिमाग में जरूर रखनी है. वो 6 हेडिंग को अच्छी तरह से तैयार कर